तो इन्होंने खुद तायीन की हुई है कि 2 साल के चेयरमैन के होंगे, 3 साल के होंगे, बाकी ओहदों जी सर, यही पोजीशन है। बिल्कुल बिल्कुल यही है जी। If your lordship will see page 141, जी 5.1.3, election of the chairman shall be held 2 years before each scheduled general election in the country. 5.1.4, in case the chairman position falling vacant due to any reason, the SG, which is the Secretary General, shall take additional charge of the office in the interim, and election for the chairman's office shall be held within 30 days of the position falling vacant. SG क्या है? Secretary General. वो कौन है? Secretary General, my lord, नहीं, इनके कौन कोई हैं मुंतखब? इस वक्त that's a grey area, but they claim it is Mr. Umar Ayub. The election commission maintains that the previous Secretary General, as per their record, Mr. Asad Umar, continues to be the Secretary General on their record. अच्छा, असद उमर साहब ने इनकी पार्टी छोड़ दी है? There's nothing on record. प्रेस में उनके स्टेटमेंट जरूर हैं. How did Mr. Umar Ayub was appointed? If your lordship may see page 464. पेपर बुक्स आपके पास है. Page 464. Volume 2, my lord, page 464. This is not Umar Ayub, this is the Chief Election Commissioner. यार क्या करते हैं? So 460. जी 464 पार्ट 2 है. Part 2. This is how the Federal Election Commission was appointed. ये तो नोटिफिकेशन है 28 नवंबर का. जी सर, उमर अयूब खान साहब का नोटिफिकेशन है. पढ़िए. Following the resignation of Barrister Gohar Khan on November 27, 2023, it is notified that Mr. Niazullah Khan Niazi is hereby appointed as CEC Pakistan Tehreek-e-Insaf with immediate effect. ये तो उमर अयूब खान इशू कर रहे हैं. उमर अयूब खान करे. उमर अयूब खान साहब किस तरह अपॉइंट हुए? There is nothing on the record of the Election Commission of नहीं, तो Pakistan. ये गौहर खान साहब किस ओहदे से मुस्तफी हो रहे हैं? Sir, from the post of the Chief Election Commissioner. अच्छा, ओके. But again, there's nothing on the record of the Election Commission communicating that, because in law, if your lordship will see, ये इनका कोई इस्तीफा है या इनको निकाला गया है असद उमर साहब को? not on the record of the Election Commission. अच्छा, आप बता रहे थे तरीकेकार. जी सर, if your lordship will see page 5.1.3, which talks about the Election Commission, the election of the chairman. ये हो गया, तरीकेकार बताइए. जी सर. Then election of other office bearers. The elections for following offices shall be held every 3 years. देख लिया, तरीकेकार बताइए. Sir, 5.2.2, elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization, including wings as given in the relevant clauses. ये बताइए ना, relevant clauses. Any losing panel shall get 2 seats. In the relevant executive committee, provided it had secured more than 35% of the total poll votes. Any losing panel shall get 1 seat in the relevant executive committee, provided it had secured more than 20% of the total poll votes. The method of removal from the office is only through the SCAD as provided for in the relevant section. There is no provision for a vote of no confidence at any level. Any seats falling vacant in any of the executive committees shall be nominated by the relevant panel. तो ये पैनल का क्या मतलब है? Sir, when elections are announced, various people come up and panels are announced that these following persons are on one panel, other persons are on another panel, and elections are held on that basis. So you belong to various, so within intra-party there are, let's say, groups, and you belong to various जब groups. ये इलेक्शंस हुए तो कितने मेंबरान मौजूद थे?
Sir, the elections, so far as the elections were concerned, they were all elected as we showed to your lordship, नहीं, वो तो उन्होंने लिखा ये मुंतखब हो गए, unopposed. मगर अनअपोज हो गए, मुंतखब हो गए जी। मगर उस मीटिंग में ये वो जो आप उसको कहना पसंद फरमाएं, इलेक्शन में 500 लोग थे, 1000 लोग थे, 10,000 लोग थे, मतलब कितने लोग थे? My lord, we don't know because once the venue was नहीं, इन्होंने बताया कुछ या नहीं बताया? नहीं, when the venue was announced that the elections are going to take place टोटल मेंबरशिप आपको पता है कितनी है? in KPK, इधर वो इलेक्शन कहाँ हुए एक्चुअली? in KPK. नहीं, किस जगह, कौन से, But किसी sir, होटल में, the दफ्तर में? election commission wrote a letter to them. नहीं नहीं, Yes. एक्चुअली हुए किधर? Venue of The election. reason why we are unable to tell your lordship the venue is that we wrote a letter to them that in order to make arrangements and in order to provide security, please communicate to us where these elections are आपको taking नहीं place. पता है? They didn't communicate to us where the elections were आपको taking नहीं place. पता है? No, sir. हम इनसे पूछ लें खान साहब से। जी, बिल्कुल। खान साहब, इलेक्शन कहाँ हुए, कौन सा वेन्यू, कौन सा था? नहीं नहीं, वेन्यू कोई होटल में हुए, कोई दफ्तर में हुए, किसके दफ्तर? हाँ, कौन सी जगह ओपन? वो एक छोटा सा गांव है, हाँ? क्रिकेट ग्राउंड है। स्मॉल विलेज। अब आपसे सिर्फ एक सवाल पूछे ना छोटा सा, किस जगह हुए? तो आपने कहा क्रिकेट ग्राउंड में हुए। चिमकनी में कोई जगह है? छोटा सा गांव है। क्या नाम है? रानो गढ़ी। ये किधर है ये? ये कोई आपका नोटिफिकेशन था कि हम इलेक्शन फला तारीख को करने जा रहे हैं चमकनी रानो गढ़ी में, कि जो मेम्बरान आना चाहें उधर वोट डालने के लिए? वो किस सफ़े पे है? ये रानो घड़ी का इंतखाब क्यों खास तौर पे हुआ है? तो एक छोटी सी जगह गांव है, अननोन प्लेस है। नहीं, ये जरा बताएं, कोई नोटिफिकेशन है सर रिकॉर्ड पे? No, sir. आप बताएं। What we नियाजुल्लाह साहब, कोई ऐसा नोटिफिकेशन है कि कहीं ये जगह हो रही है इलेक्शन, तो मेंबरान को पता तो चले ना वोट डालने कहाँ आएंगे वो? एक ये हमको देखते हैं, दिखाते हैं। यस, नोटिफिकेशन हुआ था। My lord, at page 93 in volume 1 is the letter which we received from the Pakistan Tehreek-e-Insaf. This was 90 page 93. 93। Yes, my lord. ये लेटर है जो प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी के लिए उन्होंने लिखा चीफ इलेक्शन That in compliance of the order dated 23rd November, 93 पेज नहीं, पार्ट 3 PTI has announced to hold the intra-party election on 2nd December 2023. According to the Constitution, PTI, the Federal Election Commission of PTI, has announced the schedule with polling day as December 2, 2023. The venue would be Peshawar KPK. You are kindly requested to issue necessary direction to the Chief Secretary KPK and IGP KPK or any other officer as you may deem necessary to provide us appropriate permissions and security so that order of this honorable commission could be complied with. Sir, if you नियाजुल्लाह साहब, इसमें आपने तो चमकनी का जिक्र नहीं किया है, तो आपने कहीं पेशावर में हो रहे हैं इलेक्शन। पेशावर केपी नहीं तो पेशावर तो एक बहुत बड़ा शहर है, तो कहाँ आपको सिक्योरिटी दी जाए? नहीं, कहाँ लिखा है ये आप वो तहरीरी बताइए ना, जवाब वो किधर ले बताया आपने? सिर्फ जगह बता दें, वेन्यू कोई है, कोई कागज रिकॉर्ड पे हमारे? नहीं तो अच्छा, ये सवाल उठेगा कि आपके मेम्बरान को पता कैसे चलेगा कि हम कहाँ जाके वोट डालें? भाई, इलेक्शन कमीशन तो आपके मेम्बरान नहीं है ना, ये तो एक रेगुलेटरी बॉडी है। मगर आप जरा सुन लीजिए ना, आपके अपने मेम्बरान जो हैं उनको कैसे पता चलेगा मैं कहाँ जाऊं वोट देने अपना? आप जवाब नहीं दे रहे हैं सवाल का। चलिए खैर, आगे बढ़ें। My lord, if your lordship may graciously turn the page, I am directed to refer to Election Commission of Pakistan. This is the letter from Commissioner Peshawar Division. 94 के ऊपर Page 94. Commissioner Peshawar Division writes to them, I am directed to refer to ECP
dated 30th November 2023 regarding above noted subject, and to state that immediately on receiving the directions you were contacted on telephone number such and such, as well as through letter dated 30th November on same day, copy enclosed, to provide the necessary information so that foolproof security could be provided as directed by the Honorable Election Commission of Pakistan. I am further directed to state that not only are these instructions of the ECP, but prudently this is required in the present security environment, where the province of Khyber Pakhtunkhwa is facing peculiar security environment every day, and where the law enforcing agencies are very particular about security plans, especially regarding public gatherings in Peshawar, which have faced attacks on LEAs and others, leading to significant loss of property. It is, however, noticed that no response has still been received, and therefore not even the initial work for a security plan has been started. My Lord, we therefore write to them, next page, that they should on immediate basis provide us, and then if your Lordship may see the next letter, it goes from the Election Commission of Pakistan on 30th November, page 96 and 97, I'll read two letters. 97, if your Lordship may proceed to immediately. I am directed to refer to the Honorable Election Commission of Pakistan dated 30th November 2023 on the above referred subject, and to state that in order to comply with the directions of the Election Commission of Pakistan, the following information may please be provided to make necessary arrangements for peaceful conduct of said election. 1. Venue. 2. Expected start and conclusion time. 3. List of polling staff. 4. List of participants. वो वेन्यू की बात है. जी सर, venue right at the top. Number 1, we say tell us where the venue is. जवाब मिला आपको इसका? No sir, we got no reply to this letter. तो देखिए, एक तो बात है ना, सरकार चले वो कहेंगे जी सरकार तो छोड़ो, हमें आपकी सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है, मगर मेम्बरान को तो पता होना चाहिए ना कि मैं जाके कहाँ वोट डालूं अपना, उनको तो पता हो. आप अपने वक्त पे जवाब दीजिए ना. हम सवाल आपसे पूछ चुके हैं मगर आप जवाब नहीं दे रहे ना. बहस ना कीजिए, हमने सिर्फ एक मामूली सा सवाल पूछा है. कोई कागज है रिकॉर्ड पे जिसे आपके मेम्बरान को आपने बताया कि इस जगह इलेक्शन होंगे? ये तीसरी बात है बस. अब आपकी आवाज माइक पे आ जाइए ना. कोर्ट ही कंसर्न थे कि आपको तो अपने मेंबर्स को कि हमें पता था कि भाई अगर आपका मिसाल के तौर पे मेंबर ये बैठा हुआ है, वोट डालने जाना चाहे जी, तो उसको पता तो होना चाहिए मैं कहाँ जाऊँ वोट डालने. तो हमने व्हाट्सएप के जरिए बता दिया था कंसर्न जो ड्यूटी लगाई गई थी असिस्टेंट कमिश्नर. ये आप किधर बात कर रहे हैं कि हमारा, और वहाँ लोग पहुंचे. नहीं, आपके हर सूबे में आपके मेंबर्स हैं ना नियाजी साहब, आपके हर सूबे में मेंबर्स हैं ना जी. आपका जो इलेक्शन का तरीक़ेकार है वो तो हर जगह से सूबे से भी लोग आने थे ना जी. तो अगर आप पेशावर में एक अननोन प्लेस पे कोई इलेक्शन कर रहे हैं तो उसमें सिंध के लोगों को भी आना है वोट डालने, पंजाब के भी आना है और बलूचिस्तान से भी आना है. अगर आप चलाएंगे वीडियो मैसेज, नहीं मैं वीडियो से नहीं, सर आप वीडियो की बात नहीं ना, आप ये वीडियो की बातें छोड़ दें. तरीक़ेकार से हम जानना वीडियोस पे चाहते हैं. केसेस नहीं चलाते हैं, हम केसेस जो हमारे सामने चीजें होती है उस पे चलाते हैं. ये आप लोग वीडियोस बाहर जाके जितने मर्जी चला लें. उस दिन अगले दिन भी हमने यही बात की थी किसी केस में कि भाई ये हम आईनी अदालत है, कोई एक सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं कि कोई इतला आपके तहरीरी तौर पे है या नहीं है, बस खत्म. इलेक्शन कमीशन से भी जो आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस है ना उसमें वो आपसे पूछ भी रहे हैं और आप लिख नहीं रहे. वेन्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना इलेक्शन के लिए कि आप उनको इंटीमेट करें. पूरे पेशावर में वो सिक्योरिटी आपको देंगे या सिर्फ एक जगह पे देंगे? क्योंकि जितने भी लेटर आपके हैं उसमें लिखा हुआ है कि पेशावर में केपीके में हो रहा है, केपीके पेशावर, कोई वेन्यू नहीं है. अब वो आपसे बार बार पूछ भी रहे हैं कि किधर सिक्योरिटी फराम करनी है. तो पूरा पेशावर में फिर कहीं भी इलेक्शन हो रहे होंगे, इसका मतलब है कि अगर कोई आपने जाके चमकनी में कर लिया, आप ना मांगते हो सिक्योरिटी, या आपका अपना वो है. अगर ये 30 नवंबर को आप कह रहे हैं कि मुझे सिक्योरिटी दो, प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी एट द वेन्यू ऑन पोलिंग डे, चलिए खैर आप सोच लीजिए, बाद में बता दीजिएगा. जी
भाई आप सिंपल जवाब बहस कर रहे हो, आप हमसे पूछ रहे हैं वेन्यू कौन सा है? मौजूद है, हाँ? हमने व्हाट्सएप कर दिया इलेक्शन कमीशन से मांग भाई ये बात आप 6 दफा कर चुके हैं, हम पूछे हमने तहरीरी उनको कुछ है? तहरीरी हम आपको दे देते हैं, इनको भी दिया हुआ, इनके पास मटेरियल है। हमने पेशावर कमिश्नर और पुलिस को कहा आपकी कि अगर मेंबरशिप सिंगल कितनी पैनल आया, है? यस मेंबरशिप कितनी है आपकी? हमने उनको कहा कि अंदाजन मेंबरशिप कितनी है आपकी? 8,37,950। ये आपके रजिस्टर्ड ये मेरे रजिस्टर्ड मेंबर है, वोटर है और डेटा भी मेरे पास है। 8 लाख को पता होना चाहिए था या नहीं कि इलेक्शन कहाँ योर होंगे ऑनर, और पूरे किस मुल्क को तारीख पता पे था, होंगे? हर जगह पता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इवन अच्छा अच्छा बस आप रहने दें, अभी अब हम आपसे एक छोटी बात पूछ रहे हैं, वो उसका सिर्फ जवाब दे दें ना, बहस आपकी सुनेंगे। Yes. चले आगे बढ़ी मखदूम साहब, सिर्फ एक हमारा प्लीज ठहर जाइए ना, एक ऑब्जेक्शन आप प्लीज हम इनको सुन लें ना। इन्हीं पे है ऑब्जेक्शन ना सर। भाई आप अगर हर वकील बहस करेगा तो हम किसी को नहीं सुन सकेंगे। एक आप- सीनियर वकील बैठे हैं, कम से कम उनसे इजाजत तो ले लीजिए, सर मैं एक या उनकी कोई अहमियत नहीं है, आपके अपने वकील हैं। लॉर्डशिप एक आपकी मैं जजमेंट नहीं आपसे सुनूंगा भाई, आपके जब सीनियर वकील मौजूद हैं, ऐसे नहीं होता है। आप तो पार्टी है ना, आप अब आज हमारे सामने वकील की हैसियत से नहीं खड़े ठीक है, हैं, लॉर्डशिप। यू आर ए रिस्पोंडेंट, ठीक है, आप इलेक्शन कमिश्नर हैं, सारा इल्जामात आपके सर पे है, जी। तो आप आज वकील नहीं हैं, या तो आप कहें कि मैं अपनी वकालत कर रहा हूँ, वो नहीं, अलग मैं बात है। वकालत नहीं आपके कर- मैं- वकील कौन हैं? मैं- आपके वकील कौन हैं? हामिद खान साहब है। तो फिर वो मौजूद हैं, ठीक है। शुक्रिया। My lord, I was reading to your lordship from page 55 of the order of the election commission, and if your lordship turns ये तरीकेकार खत्म कर लेना इनका, आइन में जो इनके आइन में इंदराज है, शिक तरीकेकार क्या होता है? my lord, that was Federal Election Commission is provided. ये इनका जो आइन में जो आप पहले कुछ क्लॉजेस पढ़ रहे थे जी 5 सर, पॉइंट, page- तो इसमें page- और कुछ तरीकेकार है या बस ये है? Sir, page 140, I was reading to your lordship. नॉमिनेशन फॉर्म का कोई तरीका है, मेंशन्ड है, कैसे होना चाहिए? It doesn't go into that many details, but if your lordship sees on page 141, paragraph 5.2.2, जी, elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization as given in the relevant clauses. ये रेलिवेंट क्लॉजेस बताइए कौन से हैं? ये सर आगे आते हैं, अगर आप सर आगे देखें then on page सर, इसमें 142 नॉमिनेशन फॉर्म को भरने का क्या तरीका है? वो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में है या कोई अलग से no रूल है? no sir, it's not there in How the the constitution. nomination form will be given to the नहीं मतलब वो जो अगर कोई क्लॉजेस है बता दें, नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर हम। जी सर, sir, the organization is given, sectoral organization is given at page 142 onwards. Then if your lordship will see, thereafter there is the election commission is mentioned, and and if your lordship sees नहीं ये the central organization is साहब mentioned. सिर्फ ये हम पूछ रहे हैं कि बता दें तरीकेकार क्या? ये एक पढ़ लिए पेज 90 पे मेरे ख्याल है इनका है ये 192 my lord. नो 90 पे ये कहीं इनके कॉन्स्टिट्यूशन में नॉमिनेशन फॉर्म का हासिल करना और उसको जमा करने का कोई तरीका नहीं है, आप कह रहे हैं ना? Sir. अब पेज 90 पे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लेटर लगा हुआ है, पेज 90 पे ये इनका इलेक्शन शेड्यूल है Yes my lord. जो जारी कर रहा है फेडरल इलेक्शन कमीशन, उस पे नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब की साइन है जी, अकेली। अब इसमें देखें ना, नोटिस इनवाइटिंग नॉमिनेशन पेपर्स फ्रॉम पीटीआई मेंबर 29/11/2023, Right. ये लेटर इशू भी 29/11 को ही हुआ हुआ है इनके Yes, madam. सिग्नेचर से। Nomination forms to be received by returning officers, appeals against objections, display of names. नहीं तो ये नॉमिनेशन पेपर का कोई वो है फॉर्मेट या क्या उसको कहते हैं, प्रोफॉर्मा? Sir, it's not there in the constitution, it's not there in the rules issued by the election commission. But what about where is this letter? Because इसके अंदर ये मेंशन है ना, प्रोसीजर पूरा इन्होंने किया हुआ है ना। जी sir. Appeal against objections or rejection of nomination form, display of name of contesting panel, polling day at Peshawar Khyber Pakhtunkhwa. ये रिटर्निंग ऑफिसर्स कौन थे? नॉमिनेशन फॉर्म्स टू बी रिसीव बाय रिटर्निंग The ऑफिसर्स। returning officers were, my lord, if your lordship may turn the page at page 91. The returning officers are nominated, they are all nominated by the chief election commissioner.
For the Federal Election Commission, एक सेंट्रल इलेक्शन है, एक प्रोविंशियल बलूचिस्तान, केपीके, पंजाब एंड सिंध, इसके लिए 4 अलग अलग 4 है सर। फिर अगर आप अगला सफा देखेंगे सर, तो प्रिजाइडिंग एंड असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आर नॉमिनेटेड। दे आर 10 इन नंबर। ये डिटेल नहीं है कि वो कितने लोगों ने कंटेस्ट किया है या नहीं किया है, या फॉर्म दाखिल करके विड्रॉ कर लिया तो अनअपोज आ गए, जो नॉर्मली होता है ना कि आप विड्रॉ कर लेते हो कि भाई ठीक है, आई विल नॉट कंटेस्ट। Not on our record, my lord. Not on our record. Even the withdrawal of the other panels, we don't have any records. Withdrawal panels की बात करें। Withdrawal panels कहाँ है? हमारे पास नहीं ये, we don't even have a letter showing कि बाकी panels ने withdraw कर दिया। Announcement कहाँ है? जी So, my lord, these are there. Then, if your lordship may go back to page 192, how the Federal Election Commission is to conduct itself. Secondly, you have taken my book, yeah. Yes, my lord, Federal Election Commission. If an election commission shall be formed comprising following Federal Election Commissioner. बात कर चुके हैं आप। सर, अगर आप आप रिपीट ना करें कुछ। नहीं सर, ठीक है। अगर आप सर पैराग्राफ 2 ऑनवर्ड्स देख लें, and then the functions, and then ये paragraph. लास्ट इलेक्शंस कब हुए थे इनके, इस इलेक्शन से पहले? ये कौन से इलेक्शन PTI के इलेक्शन सर लास्ट पोलिंग डे 2 दिसंबर के इलेक्शन से पहले कौन से इलेक्शन हुए हैं? 2017, डेट बताइए। 19th June 2017. 19 जून 8 जून 2, तो ये कह रहे हैं 22 को हुए, आप कह रहे हैं 17 में हुए हैं। What happened was, नहीं, वो दिखाइए हमें, रिकॉर्ड से बताइए। my lord, the 8th June 2022 intra-party elections were declared void by the दिखाए election ना commission. My lord, the first order of the of the election commission deals with it, and that order of the election commission is at page 428 in part 2 of your lordship's file. 428। 8. ये क्या कह रहा है ऑर्डर? Sir, if your lordship will see, रेलेवेंट page 435, paragraph 424. 435 पैराग्राफ। Just paragraph 24, just I'll read 5 lines and then I'll move on from here, my lord. We scrutinize all the documents provided by the CEC in respect of meetings of the General Council, as well as the alleged intra-party elections of various office bearers, but we did not satisfy therefrom the available records submitted by CEC that either the National Council dissolved at ever convened its meeting, or on 10th of June 2022 at this juncture. It would be pertinent to refer to various letters. Your lordship may Different dates for that election. each of these letters which are mentioned. कंक्लूड क्या कर रहे हैं, ऑर्डर क्या रहा है? Okay, sir, तो इनको there दोबारा टाइम दिया था ना। different dates were given to them, and वो वाला पोर्शन पढ़ देना। my lord, I'll read the कंक्लूडिंग क्या कर रहे हैं? letter dated 10th. यूनियन रिव्यू लेके इसमें उन्होंने कहा है कि जी, वो तो आगे eventually पढ़िए यही ना। करते हैं। पैराग्राफ 34 पढ़िए, आखिरी पैराग्राफ है ना? जी सर। इसको थोड़ा सा जल्दी करें ना। All right. Keeping in view the aforestated reasons, we are confirmed in our views that the respondent party failed to hold transparent, just and fair intra-party elections in accordance with its prevailing Constitution 2019, allegedly held on 10th June 2022, which is highly disputed, objectionable, which could not be accepted at all. Therefore, it is held that respondent party has failed to hold its intra-party election within the extended period of 1 year till 13th of June 2022, but we, instead of taking the final step to invoke the provision of section 215(5) of the ये Election क्या Act, 215(5) क्या है? 215(5) ये कहता है सर कि अगर आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से कंप्लाई नहीं किया और उसको 209 के साथ पढ़ के कि इलेक्शंस जो हैं वो इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सो देन यू विल बी डिनाइड अ सिंबल. दैट्स वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस. पढ़ते रहिए प्लीज।
A lenient view is taken with direction to the respondent party to hold its intra-party election strictly in accordance with the prevailing party constitution within 20 days positively, and its result along with all the required documents including Form 65 shall be submitted thereafter the election within 7 days before the commission. So this is taking a lenient view. They said hold ये आगे elections. पढ़िए. In case the respondent party fails to comply with directions of the commission and fails to hold its intra-party election within the prescribed 20 days, which will run from today, the date on which this order is announced, in such eventuality, the respondent will suffer the penal consequences of section 215, subsection 5 of Election Act accordingly, and would be ineligible to obtain an election symbol for election to Majlis-e-Shura Parliament. ये चैलेंज हुआ ऑर्डर. Sir, this was challenged before the Lahore High Court in a writ petition number 5791. एक सेकंड. In writ petition number 5791 of 2023. 5791. 1 of 2023. ऑर्डर किधर है? No, my lord, this is, I'm sorry, I've given you, lordship, the wrong number. Sorry, in WP number 81171. 811 of 2023. दोबारा क्या ये 81171 of 2023. जी. This, my lord, is at page 644 of your lordship's file, पार्ट 3 part 3. Yeah, this is that page to another door. 644. 644. Copy वालों को ये रखा है सारा. This is a copy of writ. Where is Yes, the my order? lord. Yes, my lord. Then, no, my lord, no order is passed. What happens is that this is referred to a 5-member bench of the High Court. At 6:55. ये जो क्वेश्चन ऑफ मेंटेनेबिलिटी पे एडजेंट हुआ ये. जी sir. ये And- पढ़ते हैं, ये पढ़िए ऑर्डर. Sir, through the instant constitution petitioner, the petitioner has made the following prayer. In view of the foregoing, it is respectfully prayed that this honorable court may be pleased to declare and hold that the impugned order of 23rd November 23 is misconceived, quorum non judice, and set it aside inter alia on facts and grounds as urged herein above. Declare, find, and hold that the intra-party elections held on 10th of June 2022 had been validly held in accordance with the party constitution and law. Declare that amendment to Article 5, Clause 5 has been validly and lawfully made in accordance with law and party constitution. In the meanwhile, this court may kindly be pleased to suspend the operation of the impugned order dated 23rd November 2023 and restrain ECP from passing any further adverse order till final disposal of the title petition. Notice is issued. If your lordship will then turn the page to page 657. This was the last order prior To be heard with WP is 332. This, as your lordship will see, is fixed today. ये 332 क्या चीज है? पेज 2 of this order 656 इसमें लिखा है कि ये केस सुना जाएगा एक और केस के साथ WP. There is some other case. ये ऑर्डर तो ये बताता है मखदूम साहब 8/12/2023 का कि ड्यूरिंग दैट पीरियड दे हैव ऑलरेडी कंडक्टेड फ्रेश इलेक्शंस. ये सर ये 657 657. इसमें लिखा है ना बीच में व्हेन ये मैंने नहीं पढ़ा है. ये एक 657, sir. अच्छा ये ऑर्डर तो फिर ये 15/12 का आपने पढ़ा है. जी सर. 8/12 का ऑर्डर उससे पहले का सर जो है. इसमें भी WP 332 का जिक्र है. जी मगर उससे ऊपर जो लिखा है जी, when confronted with the, ये 332 WP क्या चीज है? sir, there is another petition pending before a full bench of the court relating to other matters. I am not fully aware of it, what it is about. अच्छा ये जो पिछले इलेक्शन हुए थे इनके जो आप कह रहे हैं जायज नहीं है वो कह रहे हैं जायज है, उनके रिजल्ट क्या है? इलेक्शन रिजल्ट My lord. आप कह रहे हैं ना कि ये जो इलेक्शन इनका कहना है कि ये 8/6/2022 के जो इलेक्शन थे इनके ये सही थे. आपको कहना है ये इलेक्शन सही नहीं थे. My lord. उसके रिजल्ट्स क्या हैं?
उसका सर उसके नतीजे पे दे हेल्ड अनदर इलेक्शन उनके निताइज किधर है, कौन जीता? This is the election which that is the election which your lordship saw where everybody was नहीं again. नहीं, ये तो अभी के इलेक्शन की बात हो रही है ना। मैं 8/6/2022 के इलेक्शन का पूछ रहा हूँ, जी सर। वो निताइज कहाँ है उसके? आप सवाल समझ गए? My lord, yes. रिकॉल कर They are not on the record. The reason why we have not brought them on the record is that they accepted the order of the election commission and they ये have. वो वही लोग हैं जो कि ये मौजूदा हैं या अलग लोग थे? My lord, I'll have we can check, but खान साहब आप बता सकेंगे, इस पर रोशनी डाल सकेंगे? जो 8/6/22 का जो आपका इलेक्शन हुआ था उसमें इलेक्टेड कौन हुए? आप बकौल आपके कौन लोग इलेक्टेड हुए उनसे? जो हुए हाँ पुलिस काम करेंगे नहीं, वो फर्क है जो मौजूदा इलेक्टेड लोग हैं वो उनकी जगह पता नहीं ये दे दें, मैं बताता हूँ वॉल्यूम में पड़े ये सारे इसका लिखा है रिकॉल, वो उस ऑर्डर में लिखा है, गुजारिश करने उसी ऑर्डर में सर लिखा है सर इन्होंने ये इलेक्शन कराया एंड देन मिस्टर भी क्वेरीज जनाब नहीं नहीं, बेशक देखिए हम आपको बिल्कुल, आपकी बात जायज़ है, हम आपको वक्त देंगे, मगर जैसे जैसे सवाल उठते जा रहे हैं तो वो आप नोट करते जाइए, या फिर अगर आपके फौरन जवाब है तो दे दीजिए, क्योंकि ये 3 वॉल्यूम्स इनने फाइल किए हैं, हमें भी बड़ी दुश्वारी हो रही है इसको पढ़ने में, तो अगर किसी चीज़ का जवाब है तो दे दीजिए, अगर जवाब नहीं आप लाना चाहते हैं बिल्कुल आप जरूर फाइल कीजिए। आई नीड इंस्ट्रक्शंस ऑन नहीं आप नोट करते जाइए ना ये चीज, वो नोट कर रहे हैं, तो नोट कर रहे हैं। अब सिर्फ हमें ये बता दीजिए कि ये जो नताइज थे जो 8/6/2022 के, ये 8/6 देखिए ये इलेक्शन डेटेड इसमें पेज 412 पे है 10/6/2022 10 को हुए, 6/8 को हुए, हमें 10/6/2022 के थे ना आपके पिछले इलेक्शन, इसमें पेज 412 पे है जनाब। प्रेयर में हाईकोर्ट की प्रेयर में लिखा है 10/6/2022। 4-1 एट दैट टाइम गोहर अली खान साहब 4-1 चेयरमैन गोहर साहब थे। ये जो आपका 4-1 412 प्रॉब्लम। ये पेज 412 देख लीजिएगा। 412 हाँ ये आ गया ना, नहीं ये तो कुछ और है, नहीं 412 सर, ये सब पढ़ दें अगर आप, पार्ट 2 में। हाँ पढ़िए प्लीज। जी रेफरेंस वीसीबी लेटर डेटेड सो एंड सो, जनाब 412 पे है। नहीं, अगर इलेक्शन की सिर्फ डेट का इशू है तो वो तो आपके 10/6/2022 को हुए थे, वो आपकी ये मैं तो- प्रेयर से पढ़ रहा हूँ, ये आपकी तो जो कुछ हाईकोर्ट और में चीज़ प्रेयर है ना, इलेक्शन कमीशन का जो आपकी प्रेयर है, नहीं जवाब नहीं, जो आपकी प्रेयर थी हाईकोर्ट में, लाहौर हाईकोर्ट की बात हो रही है। नहीं उसमें आपने ये कहा था कि जो हमारे पिछले इलेक्शन 10/6/2022 के थे वो ठीक थे, उनको वैलिड डिक्लेयर करें। वो जो पिटीशन पेंडिंग है आपकी हाईकोर्ट में, जो ये मखदूम साहब बता रहे हैं 5 मेंबर के सामने जो था इशू, जी वो फिर इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया ना, आपने फ्रेश करा लिए। फिर उसके बाद करवाए दूसरे, ये क्योंकि they gave us 20 days to do that, so we had to do it within that prescribed time and we did it, which they are challenging now. एक सेकंड, मैं जरा भी कंफ्यूज हो गया हूँ। बकौले आपके 10/6/2022 को इलेक्शन हुए जी इनका कहना था वो सही नहीं है, जी इनने ऑर्डर पास किया, मगर वो ऑर्डर आपने चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में, आपने वो ऑर्डर माना नहीं। किया, लेकिन कंप्लाई भी किया जी कंप्लाई भी किया हमने उसी के तहत। तो फिर आपका कहना है ये वो जो पिटिशंस आपकी जो फाइल्ड हैं वो आपने विड्रॉ कर ली हैं, जो हाई कोर्ट में पड़ी हैं, लाहौर हाई कोर्ट में WPR1171, लेकिन we have already complied with the order ना, so therefore that becomes infructuous। नहीं मगर कोई इतला तो देना हाई कोर्ट को जा करके। नहीं सर दी है, इसमें मेंशन की है, होगी। आप पेज देखिए, पेज 657, पेज 650 में आपका ये 81171 ऑफ 2023 ये पिटीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये आपसे पूछा उन्होंने, व्हेन कन्फ्रंटेड विद द क्वेरी दैट सिंस इंटर पार्टी इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ pursuant to impugn order dated 13 September 2023 passed by the election commission of Pakistan have been held as to how this petition is maintainable। उस पर आपके वकील साहब ने जवाब दिया कि ये अभी हम इसको आगे करेंगे। already subjected to full bench जी जी of this court। तो ये नॉलेज में आ गया हाई कोर्ट। नहीं ये पूरा आगे लिखे ना, सबमिट्स
Submit that since similar question is already sub judice before the learned full bench of this court in WP number 332 of 2023 and other allied matters, proprietary demands that instant petition be also be referred to the learned full bench. ये हुआ है बस इसके में। मुझे देखिए, अब मैं जरा बिल्कुल कंफ्यूज हो गया हूँ। एक इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर आपके किया, कब ऑर्डर है इनका इलेक्शन कमीशन का? Order, my lord. 428 पे जो पेज है उसका तारीख है 23/11/2023 23/11/2023 ये नहीं वो जो रिट पिटीशन में चैलेंज किया हमें तो याद हो रही है। पहला वाला पहला वाला तो यही है ना, डिक्लेयर होल्ड दैट इंक्लूड ऑर्डर। Third, the matter was heard on 13th September. एक सेकेंड, आपका ऑर्डर किधर इलेक्शन कमीशन का वो My देखा lord, जो आप पहले पढ़ रहे page थे 428. 428. This is the order passed on 23rd November 2023. 23 नवंबर। ये डेट कहाँ लिखी है? सर डेट से पढ़ के बता रहा हूँ आपको, परेड क्लॉज में जो इनकी है हाई कोर्ट में। The date of hearing was 13th 9. डेट ऑफ हियरिंग टुडे, अनाउंस टुडे। तो ये इसकी तारीख क्या है इस ऑर्डर की? इस ऑर्डर की तारीख सर 23/11 है, ये 428 पे लगा हुआ है। 23/11/2023 है जी सर। और नीचे उन्होंने साइन पे डेट नहीं डाली है, बट वो डेट ऑफ हियरिंग ऊपर लिखा हुआ है। जी सर। नहीं तो उन्होंने एक साथ ऑर्डर को चैलेंज भी किया और एक साथ उन्होंने इलेक्शन भी कर लिया, यस मैडम, ये हुआ। यस सर। तो फिर उन्होंने ये दरख्वास्त क्यों की हाई कोर्ट को कि मेरा ये इसको पेंडिंग रखें? वो कह रहे थे कि जिसको हम विड्रॉ कर रहे हैं। They could have, but they नहीं, मतलब मुझे इसकी जरा लॉजिक बताइए खान साहब। वो फिर अगर आप इलेक्शन करवा रहे हैं तो फिर उसको आप वापस ले लें, बात को खत्म करें, उसको जिंदा क्यों रख रहे हैं पिटीशन को, लाहौर वाली को? to the contrary, they had it referred to a larger bench of 5 judges. Am I missing something? I can't follow this. Sir, we don't know what was the logic. The elections had taken place, but they nevertheless. अगर वो बैरिस्टर अली सीएस के लगाओ। Mr. Gauhar will explain why that was. जी फरमाइए। The see-through petition have actually been filed when Election Commission was trying to remove the chairman Imran Khan from the position of chairmanship of the PTI. And they were making their excuse. आप देखिए ना, अब आपने आगाज ही बात का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से किया है। No, Your Honor. आप हमें सिर्फ ये बता दें जी। कि वो जो पिटीशन आपने जो फाइल की थी, जब क्यों आपने पेंड हो गई? उसको आपका क्या बना, आपने उसको जिंदा क्यों रखा है? Your Honor, वो उसके साथ क्लब है, वो सेम पिटीशन है, डिस्क्वालिफिकेशन का इशू है क्योंकि इसमें चेयरमैन ने इलेक्शन नहीं लड़ा, इसलिए वो उसके साथ हमने वो क्लब तो करवाया 332 कि को लीगल इश्यूज पे यस 332 है वो। यस योर ऑनर। खान साहब मुझे बात समझ नहीं है, आप मुझे समझा दें खान साहब। आई हैव नॉट अंडरस्टूड, जरा मुझे नहीं, जरा समझा देना, बात मैं समझ योर नहीं आ ऑनर रही एक है मिनट बात। की इजाजत, हमने वो पिटीशन उसके साथ इसलिए क्लब करवाया कि जो ऑब्जर्वेशन इलेक्शन पहले ऐसे कमीशन ना ने दी बताया ना, थी, पहले बताया 332 है क्या? 332 वो पिटीशन है जिसमें हमने चेयरमैन पीटीआई के रिमूवल फ्रॉम चेयरमैनशिप के केस के सिलसिले में जो किसने नोटिस remove आया किया था उनको? इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस इशू किया था इमरान खान को। यस, तो उसका तो इससे इलेक्शन से ताल्लुक नहीं है ना। योर ऑनर डिस्क्वालिफिकेशन का केस चला रहे थे कि हम क्यों ना आपको रिमूव करें फ्रॉम चेयरमैनशिप। वो तो हम बात समझ गए, वो केस ऑर्डर है ना Yes, Your Honor. 332 में, इससे तो कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन की बात पूछ रहे हैं आप। योर ऑनर ताल्लुक है, वो डिस्क्वालिफिकेशन का बेस बना के चेयरमैनशिप से हटाना चाह रहे थे। इसमें जब नोटिस आया कि आपके इलेक्शन नहीं हुए तो उसमें उन्होंने वो फैक्ट्स का जिक्र किया, लीगली इनकरेक्ट कराया। तो जब कोर्ट में चला गया, कोर्ट में पढ़ा गया तो उन्होंने कहा सेम इश्यूज इन्वॉल्व है, लिहाजा लीगल साइड पे उसके साथ क्लब कर देते हैं। अदरवाइज वो इन्फ्रैक्चर्स हो चुका है क्योंकि हमने इम्प्लीमेंट किया टू द एक्सटेंड ऑफ इंट्रा पार्टीज इलेक्शन। अच्छा एक सेकंड है, एक सवाल और उठेगा। जी योर ऑनर। एक मैटर आपने खुद लाहौर हाई कोर्ट गए, 5 मेंबर बेंच बनवाई, इलेक्शन का मैटर है, इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास किया है कि आप दोबारा इलेक्शन कराएं, आपका मौक़िफ़ था इलेक्शन सही हो, फिर आपने कहा चलो फिर भी कर देते हैं इलेक्शन दोबारा, खुश हो जाएं, तो फिर आप लाहौर हाई कोर्ट ही में रहते हैं ना, फिर आप पेशावर क्यों चले गए? योर ऑनर हमने इलेक्शन पेशावर में करवाए थे।
इलेक्शन आप पेशावर में करवाए थे तो उससे तो कोई मतलब योर नहीं ऑनर होगा ना। मेजॉरिटी ऑफ रीजन खान साहब जरा मुझे समझ नहीं योर ऑनर आप मैं कानूनी हम क्यों गए थे योर ऑनर फोरम शॉपिंग करने नहीं गए थे इस्लामाबाद में हमारी ये लीडरशिप आ लफ्ज नहीं आपने सकती इस्तेमाल किया, मैंने नहीं इस्तेमाल किया। मैं ये योर ऑनर सिर्फ एक नहीं, मिनट अब आप देखिए ना, एक कोर्ट के पास एक लिस्ट पेंडिंग है, यस योर ऑनर इलेक्शन ही के मुताबिक है, और ना सिर्फ आम बेंच है, मैंने 5 मेंबर बेंच आपके लिए बना ली है जी। अब वो मैटर पेंडिंग होते हुए दूसरा हाई कोर्ट देख कैसे सकता है इस बात को, ये इसका जरा कानूनी जवाब दीजिए। योर ऑनर मैंने अर्ज ये किया कि टू द एक्सटेंट ऑफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वो पिटीशन इनफ्रक्चुअस हो गई जब हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। नहीं, पर वही ऑर्डर है ना, ऑर्डर तो वही इलेक्शन कमीशन का। योर ऑनर वही ऑर्डर है, लेकिन उसको जब हमने अमल कर लिया उस पे, जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो हमने इलेक्शन कराए पेशावर में, पेशावर में इस इलेक्शन ना इन्फ्रक्चर्स होने समझ की गया, है, हाँ। ये मेरे हिसाब से आपकी बात लॉजिकल है, मगर इस ऑर्डर में आपके वकील ने कहा कि नहीं इन्फ्रक्चर्स हुई है। योर ऑनर वो आप लीगल पढ़िए। साइड पे इन्फ्रक्चर्स नहीं दोबारा हुई ना। पढ़ते हैं ऑर्डर। Sayyid Ali Zafar advocate representing the petitioner submit that since similar question is already sub judice before the learned full bench of this court in WP number 332 Yes. and other allied matters, propriety demands that instant petition be also referred to the learned full bench. Yes, Your Honor, High that's Court right. raised the question. High Court has raised the question that it has become sub judice because you have already complied with the order. Yes. But if your counsel said that it is not sub judice, let it be fixed before the same 5-member bench. Your to hear. Honor, yes, to the extent of holding of What you are intra-parties arguing, that elections. is correct. Yes. According to legal situation, it had Yes. become infructuous. So that has become infructuous to the extent of intra-parties elections, but This since is the questions this were is the involved. divergent arguments between you and the earlier counsel. Your Honor, which is the legal appearing questions before the- involved in that petition were alive, so they were kept to the extent of those legal questions, and that's the reason that has been clubbed and referred to the full court. We held the election, they were full, the election were held at Peshawar. Your Honor, the entire leadership was unable even to come to नहीं, सॉरी, Islamabad. आपके अपने इलेक्शन कमिश्नर ने कहा they were not held in Peshawar, they were held in some place called चमकनी। Your Honor, हमने अरेंजमेंट करवाए थे